But in the last class, we have already discussed about projectile motion. And in this class, we will Yes, discuss sir. about equation of projectile. But we will discuss about equation of projectile. Project. But see, just like आपने देखा होगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. बेटा इक्वेशन ऑफ जब आप स्ट्रेट लाइन लिखते हैं तो उसमें क्या आता है बेटा? स्लोप. टेन थीटा को स्लोप कहते हैं बेटा. क्या कहते हैं? स्लोप. इंटरसेप्ट. Flow. इंटरसेप्ट यानी कि y is equals to mx plus c. बेटा this is the equation of straight line. Beta, what is m? M is known as tan theta. Tan theta, that is slope. P by V, slope. Tan theta. And what is slope? C. C is intercept. What is intercept, बेटा? बेटा इस इक्वेशन में जब x कोऑर्डिनेट जीरो ले लीजिए तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा. जब ये हम x कोऑर्डिनेट जीरो लेंगे तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा और y इज इक्वल टू c. यानी कि y x कोऑर्डिनेट अगर ये बेटा इसमें x कोऑर्डिनेट जब जीरो लेंगे दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस. तो x कोऑर्डिनेट जब जीरो हो गया तो y की जो वैल्यू है बेटा दैट इज इंटरसेप्ट c. एंड व्हाट इज स्लोप? दिस इज tan थीटा. tan थीटा इज द स्लोप. तो बेटा जिस तरह से स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y is equals to mx plus a. Similarly, there are equation for all the different types of graph or for parabolic motion, that is projectile motion, or for any parabolic path. See here, beta, if you project now, we are going to derive the formula for equation of projectile. Let a body is projected by initial angle theta. What is u? U is the initial velocity of projection. But you know, this is the surface of Earth. So the body will move a parabolic path. And this path is called parabola. We will derive the equation of this parabolic path. We will derive the equation of this parabolic path. This is the straight line. Let a body projected with angle theta with initial velocity u. What is u? Initial velocity of projection. Beta u है initial velocity of projection. With what? U is the velocity with which we have projected the body. Initial velocity of projectile. And what is theta? Theta is the angle of projection. Angle of projection. But we have already discussed about this fact. With perpendicular, this is known as u cos theta, horizontal component of velocity, and this is u sin theta. This is vertical component of velocity. U sin theta is vertical component of velocity. Let this is the path of projectile. Let at time t. Let at time t. But at t time per after projection, body is at point P. Let after time, after projecting this projectile, the body moves here. It can be anywhere. We are taking at any time t, the body is at point P. Let at time t, the body is at point P. P point पर है. What is the vertical displacement? From the surface of this is y. And what is the horizontal displacement? This is x.
horizontal displacement of the body is x. Now you know along the horizontal direction there is no acceleration. Along vertical direction A is acting minus G. That is acceleration is acting vertically downward, because if any mass is there, then this mass will be always attracted by the earth towards the center. So that's why in this direction, vertically upward direction, acceleration is minus G. Minus G means acting vertically downward, because earth always pulls any body in downward direction. So minus G, here upward sign is there, A represents minus for vertical upward motion. Now you see here, beta. When the body reaches here, what is the horizontal displacement? X. And what is the vertical displacement? Y. So beta, you can say S is equal to ut in horizontal direction, the displacement x. What is the velocity? U cos theta. Beta, along horizontal direction, what is the velocity? U cos theta. You cost it. And what is the time taken by the body to move from here to here? T is time. During time t, if you see from here, the body moves y displacement, vertical displacement y, and horizontal displacement x. So in along horizontal direction there is no acceleration. So s is equal to u t. So t can be written as x by u cos theta. You put this as equation 1. Okay. Now, the vertical displacement of the body. What is the vertical displacement of the body? The vertical displacement is what? Y. But you know when the body moves upward, the body is attracted by the earth towards downward direction. So what is the formula for motion against gravity? S is equal to ut minus half gt square for motion against gravity. But what is the initial velocity? U sine theta along vertically upward direction. But see here, I'm writing here because some space is required. So that's why I'm rubbing this one and writing this equation here. But you see here, what is the vertical displacement moved by the body? This is y. Now what is the initial velocity in upward direction? U sine theta. Into t. But we have already derived what is the time taken by the projectile to move from here to here. That is time t. And what is the value of t? X by X upon 4. u cos theta. U cos theta. This is u initial velocity. This is what I u cos theta minus half g t square. But I square of this x square by u square cos square theta. So what are you cancel out? Sin theta by cos theta. Sin theta by cos theta, tan theta. So this is the equation of projectile. X tan theta. Tan x. Let us see here. What is the slope? Tan theta. What is the slope? Tan theta. I will explain. Tan theta. Sin theta by cos theta, tan theta. X left. Tan theta into s. Just like in previous case. Mx
In case of straight line, slope was m. Here slope is tan theta minus half g x square by u square. It is visible. U square Yes, sir. cos square theta. Yes, beta. Click this one. This is known as equation of projectile. Y is equals to tan theta into x, mx slope, and this is intercept. Half minus half gx square by u square cos square theta. You know, this whole is the equation of projectile. This whole equation is known as equation of, but this is known as equation of projectile. Projectile motion. Yes, beta. One question is there. For example, a pillar of height 30 meter is there in front of at a horizontal distance of 20 meter. With what velocity? But two question is there. With what velocity you should throw a ball so that it may just cross the pole? Just cross the pole. तो बेटा just cross the pole तो बेटा ऐसे बनाना. ये बेटा इसको मैक्सिमम ऊंचाई बनाएंगे और बेटा 20 to 40 रेंज हो जाएगा. And this is what? With what velocity you should throw the ball and with what angle? Two question is there. U and theta is asked. U and theta is asked. So range, for range you know formula u square sine 2 theta upon g. Range is known. And for maximum height, what is the formula? U square sine square theta upon 2g. See here, beta. U is not known, theta is not known. U is not known, theta is not known. Two variable, two equation. You can solve two equation. What are the two variables? U and theta. So beta, what you have to do? You put in place of R, what you will put 20 plus 20, 40. In place of maximum height, you put 30. G, you can take 9.8. Everything is known, only U and theta is not known. So make two equation, and by the help of these two equation, you can easily solve out the value. Now next problem, but you see the next problem. Question number 2. If it is given that a body is projected with initial velocity 80 meter per second by making an angle theta of 60 degree with the horizontal. But determine the range, height, and time of flight of projectile. But see here, first you try to draw the free body diagram. But U is what? 80. And this is the range, this is the maximum height,
This is angle theta. Theta is given 60. So beta, what is the formula of time? 2u sin theta upon g. 2. What is the initial velocity? 80. And theta is what? 60 degree. Beta, you have projected this body by making angle 60 degree. This is the formula for time period of time of flight of any projectile. 2u. U is what? 80. Sin theta. Sin what is the angle of projection? 60. Sin 60. 2u sin theta upon g. What is the value of g? You can take 10 in place of 9.8. You can take 10 now. So it is 10, 8, 8 2 16. 16 into sin 60 root 3 by 2. It is 8 root 3 second. This is the formula for time period. Time of flight, not time period, time of flight. Now, how you can determine the range? What is the formula of range? U square sine 2 theta upon g. This is the formula for range. What is U? What is U? 80. 80 square, 80 into 80. Sine 2 theta, sine 2 into, what is the angle of projection? 60 into 60. You know 60 into 2, 120. 2 theta, 2 into theta, angle of projection 60. 60 into 2, 120. But a sine 120, you know Yes, the sir. value of sine 120? It is root 3 by 2. But see here, you know sine 0, 0 degree. 30, 1 by 2. 45, 1 upon root 2. 60, root 3 by 2. 91. But see here, you just make a mirror image. But a 0, 180, 0. Sine 180, 0. But a 30, 180 minus 30, 150. Same value, 1 by 2. But a 45, 180 minus 45, 135. 1 by root 2. But a 60, 180 minus 60, 120. Root 3 by 2. Same value. This value is the mirror image of this value, and whole this one is the mirror image of this one, but whole this value will be negative one. Why? Because the perpendicular is negative. So what you have to do? You have to just take the mirror image like this. 30 above, 0, 180, 360. 360 plus 30 minus 30, 300. 1 by 2 minus 1 by 2. Plus 45, 300 minus 45, 315 like this. Same put value minus. Same value here. Same value here, 270. 1 minus 1. Like this, you can find out. Sin 120, what is the value of 120? Root 3 by 2. Put here. Upon g is 10. What is the value of sin 120? Cut this. 8 6 480 into sin 120 root 3 by 2. So what is the answer? 240 root 3. Range is 240 upon 240 root 3. 240 root 3 meter. This is what? A range. Similarly, beta, we can easily find out the maximum height of the projectile. What is the maximum height of the projectile? Which formula we will use? For height, we will use this formula. U square, sin square, theta upon 2g. We have already derived this formula. What is the initial velocity? 80 square, sin square theta, sin theta. What is the value of sin 60? Sin 60 root 3 by 2 ka square hai beta. Sin square theta. Here range is sin 2 theta or height is u square sin square theta. Root 3 by 2 ka square. 60, sin 60. You put the value of theta is 60. बटा sin 60 का स्क्वायर करना है. sin 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा? रूट 3 by 2 का स्क्वायर. रूट 3 का स्क्वायर 3 4. बेटा 2 into g की जगह 10 ले लो बेटा. आ गया रेंज. रेंज क्या आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4. बेटा 80 into 80 आ जाएगा और ये नीचे क्या आ जाएगा बेटा? 2 into 10 20 आ जाएगा. आसानी से कट गया बेटा. 4 20 ये कट गया बेटा. 8 3 240 meter. This is what height. Maximum height
range, time of flight. In this way, we can easily find out the different values. Yes, sir. बेटा अब देखिए कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, उसको मैं डिस्कस कर रहा हूं। बेटा यहां से यहां एक एंटी क्राफ्ट गन है। एंटी क्राफ्ट गन वार में यूज किए जाते हैं बेटा, एनिमी प्लेन को गिराने में यूज होता है। एंटी क्राफ्ट गन है, यहां क्या है, एंटी क्राफ्ट गन। बेटा ये यहां से फाइटर प्लेन उड़ रहा है, 3 किलोमीटर ऊपर फाइटर प्लेन उड़ रहा है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ फाइटर प्लेन? बेटा बहुत होती है, मैं यहां 720 दे रहा हूं, एनसीईआरटी बुक की प्रॉब्लम है। बेटा ये समझिए 1440 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। बेटा the army man see the fighter plane just above his head, he fired the bullet। बेटा बुलेट फायर किया तो क्या सीधा फायर करेगा तो लगेगा बेटा? he has to hit the army man just who is on the earth surface want to hit this plane, so what he will do when this army man just see the plane over his head, he fires। बेटा जब तो अगर वो सीधा फायर करेगा तब तो प्लेन जैसे ही ये यहां से फायर किया बेटा, ये प्लेन यहां है, ये निकल जाएगा बेटा, कोई काम का नहीं। बेटा ये क्या करेगा? बेटा इस गन को थोड़ा सा इंक्लाइन करेगा, कैलकुलेट करेगा और ये फिर फायर कर देगा। यहां से बुलेट फायर हो जाएगी बेटा। अभी क्या होगा बेटा, ये थीटा डिग्री से फायर करेगा विद द वर्टिकल। जब ये थीटा डिग्री से फायर करेगा तो बेटा देखिए जैसे ये उसके ऊपर देखता है ये फायर कर देता है थीटा डिग्री। बेटा ये देखिए ये प्रोजेक्टाइल का पाथ लेगा, हिट कर दिया बेटा। आर यू गेटिंग और नॉट? बेटा Yes, sir. जैसे इसने देखा थोड़ा सा इंक्लाइन किया, इसकी स्पीड को पहचाना और थीटा डिग्री इंक्लाइन करके फायर कर दिया। बेटा बुलेट ऐसे जाएगा प्रोजेक्टाइल के पाथ में, यहाँ हिट कर देगा उसे, प्लेन ऐसे जा रहा है और यहां जैसे पहुंचा उसी समय ये जाकर इसे हिट कर दिया। आर यू गेटिंग बेटा? स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा बेटा, बेटा ये तो प्रोजेक्टाइल पाथ में जाएगा। तो बेटा लेट दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट एंड द here it is given that muzzle speed of, but let this speed be of bullet is 1200 1000 मीटर पर सेकेंड। 1000 मीटर पर सेकेंड है बेटा बुलेट की स्पीड। कितने स्पीड है? 1000 मीटर पर सेकेंड। और इसकी स्पीड क्या है बेटा? इसको 5/18 मीटर पर सेकेंड में चेंज कीजिए, 1440 5/18 400 मीटर पर सेकेंड है बेटा। What is the speed of plane? 400 meter per second. तो यहाँ लिखेंगे lit the muzzle, what is the 1000 meter per second? The muzzle speed of the muzzle velocity of bullet that is coming from the anti-craft gun. So let the bullet fire with fire
with angle theta, with angle theta with the vertical, theta with the vertical. बट आप देखिए ये इसे हिट करेगा तभी, मानेगा टी समय बाद इसने हिट किया. लेट आफ्टर टाइम टी ऑफ फायरिंग, आफ्टर टाइम टी ऑफ फायरिंग, bullet hits the plane. तो बेटा जैसे ये जा रहा है ये इसे हिट कर रहा है. इतनी देर में जब जैसे यहाँ फायर किया, जीरो समय था बेटा, टी समय बाद हिट किया. तो आफ्टर टी टाइम दोनों का क्या सेम होगा? जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसने मूव किया प्लेन ने, उतना ही सेम डिस्टेंस किसने मूव किया बेटा? किसने मूव किया? ये एक्स डिस्टेंस प्रोजेक्टाइल में अभी जस्ट हमने पढ़ा. T, what is the horizontal displacement moved by the this bullet? X, and this distance is equal to distance moved by the plane during time t. Are you getting? तो यहाँ कंडीशन क्या होगा? Yes, The bullet will hit the plane only when the horizontal distance moved by the bullet during time 0 to t will be equal to the horizontal distance moved by the plane. बेटा अगर ये देखिए दोनों हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दोनों का सेम होगा तब तो दोनों टकराएगा. अदरवाइज ये ज्यादा अगर प्लेन मूव कर दिया तो आगे निकल जाएगा और गोली पीछे से निकल जाएगा, फायर हिट करेगा. बेटा क्लियर है? तो ड्यूरिंग टाइम टी yes, sir. bullet hits the plane, and this is possible, and this is possible only when horizontal distance, बेटा कहने का मतलब horizontal distance moved by the plane will be equal to horizontal distance moved by the plane will be equal to horizontal distance moved by the bullet. तो प्लेन कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है बेटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी इनटू टाइम यूटी, कोई एक्सेलरेशन है बेटा. और इसका क्या होगा बेटा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो प्रोजेक्टाइल में जस्ट वी हैव रेड no acceleration is there because of gravity. Gravity is acting vertically downward. No part of g will act along horizontal direction. So what is the horizontal distance moved by the, बेटा वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल है जल्दी बताइए? वर्टिकल से इसने थीटा बनाया, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा बेटा? जल्दी बताइए वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होगा? बेटा मैंने बताया था जिधर से एंगल बनता है बेटा cos, इधर cos बनेगा बेटा, और जिधर से 90 माइनस थीटा बनता है बेटा हो जाएगा साइन थीटा. तो अब चेंज हो जाएगा बेटा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट का साइन थीटा, ये वेलोसिटी ऑफ प्लेन इनटू टाइम, वेलोसिटी ऑफ बुलेट का साइन थीटा कंपोनेंट इनटू टाइम. बेटा दोनों का समय टी टी सेम है बेटा, टी टी कैंसिल हो जाएगा. प्लेन की वेलोसिटी क्या है बेटा? 400, और बुलेट की वेलोसिटी क्या है बेटा? 1000 इंटू साइन थीटा. तो बेटा साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? 10101010 4/10. बेटा साइन थीटा इज इक्वल टू 0.4 वैल्यू देख लेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल से, और वी विल टेल व्हाट इज द एंगल, what is the angle we can easily predict. See here beta, we are discussing about the horizontal projectile. See here beta, from some height just like above the building, if we are throwing any body from some height above the surface of the earth, if we are throwing any body, this is the surface of earth, if we are throwing any body horizontally with initial velocity u. What is the u? U is the velocity of any body projected horizontally. Projected horizontally. Let us see here.
if we are projecting any body along the surface of Earth from some height, for example, we are throwing the ball from the top of a building along horizontal direction. Then better this body will move this path, and this is the range. The horizontal distance is this. Vertical height is already known, and the time taken by the projectile to move its parabolic path, this is time of flight. Now you see here, beta, one of the famous observation that was taken by Galileo was that if we are just dropping a ball like this, or if I'm throwing the ball, same ball from here, but I'm throwing the chalk. This chalk I am throwing. So if I'm letting the chalk to fall down freely from here, and I am throwing the ball like this horizontally, बेटा ये हॉरिजॉन्टल किसी भी वेलोसिटी से फेंका, एस्केप वेलोसिटी से कम होना चाहिए. तो ये कितना हो ज्यादा वेलोसिटी से फेंके, बेटा ये जमीन को सेम हॉरिजॉन्टल यानी कि सेम हॉरिजॉन्टल हाइट पे इस बॉल को फ्रीली ड्रॉप किया और एक बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंका. आप देखेंगे बेटा सेम समय में दोनों गिरेंगे, सेम समय में दोनों जाकर अर्थ पर गिरेंगे. बेटा एक बॉल को फ्रीली छोड़ दिया गिरने के लिए और दूसरे बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंका किसी भी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर, बेटा आपकी मर्जी कितना हो ज्यादा स्पीड से फेंकिए. तो बेटा दोनों जमीन अर्थ पर सेम टाइम में गिरेंगे. तो if in such kind, what you have understood, that if we take two balls, if first one is allowed to fall freely and at the same instant of time other ball is thrown horizontally with certain velocity, we find out that both the ball fall onto the surface in same time intervals. So if I am throwing the ball along horizontal direction with velocity u, then what is its initial vertical component? It will be 0. Why? Because this angle is 90. U cos 90, 0. So initial vertical component is 0. Here, initial vertical component. Initial vertical, are you getting or not? बेटा आपको समझ आ रही है? Yes sir, getting. फेंका तो इस वेलोसिटी कोई भी कंपोनेंट नीचे नहीं लगेगा क्योंकि एंगल है 90. u cos 90 क्या लगेगा बेटा? 0. जैसा कि हम लोग प्रीवियस केस में करते थे, अगर u वेलोसिटी से फेंका और हॉरिजॉन्टल के साथ बेटा थीटा बनाया तो ये कंपोनेंट बनता है u cos. बेटा हमने हॉरिजॉन्टली फेंका तो उसका कोई भी कंपोनेंट 90 डिग्री डायरेक्शन में u cos 90 क्या होता है? 0 नहीं लगेगा. सो हियर इनिशियल वर्टिकल component of velocity is 0. Component of velocity is 0. You see here, beta, this projectile is moving like this, but the vertical displacement is still h. Vertical displacement is still h. Now you know, for in vertical direction, if the ball is, we are considering if motion in vertical direction, for motion in vertical direction, what is the displacement in vertical direction? See, the projectile move like this. This is the horizontal and this is the vertical. Vertical direction distance is x. ut, s is equal to ut. For vertically displacement, what is the equation of motion? S is equal to ut plus half gt square. But as here, what is the initial vertical component? 0, and total time of flight is t plus half g t square. Vertical displacement is h. This becomes 0, t into g 0. H is equal to half
G T square. Beta 2 goes here, G comes here. So we can write T square is equal to 2h upon G. So time of flight will be root under 2h upon G. Time, this is the equation of time of flight for horizontal projection. And this type of projectile is called horizontal projectile. Now you see here, beta, what is the range? Range. But you know that in horizontal direction no acceleration is there. So S is equal to ut. What is the initial velocity? U. And time is t. In place of t, what we can put? What we can put? Root under u into root under 2h upon g. This is the formula for range. This is the formula for range. But u into t, ut plus half gt square will be 0. No acceleration is there along the horizontal direction. So, along horizontal direction, we know that only the gravity, if a ball is moving along horizontal direction, we know that ball is under gravity, acceleration due to gravity. The ball is attracted by our surface in vertical direction, not in horizontal direction. No acceleration is there. So S is equal to ut plus half at square, h0. So plus half at square will be not applicable. So S is equal to ut plus half at square will be not applicable because the acceleration in horizontal direction is 0. So u is the initial velocity and time is root under 2h upon g. So this is the formula for what? Range. This is the formula for what? Range. But now let us discuss about projectile on inclined plane. On inclined plane. Inclined means बेटा झुका हुआ plane जो होता है inclined plane उसे क्या? बेटा see here, like this is inclined plane. This is theta. But in this case, this is the plane surface. And if we are throwing a ball over this inclined plane in horizontal direction, this is the first case. Ball or a body is projected. Body is projected horizontally. Body is projected horizontally. With initial speed u. With initial speed u. Now initial velocity we will see initial velocity u. Now you see here, beta, if this is the initial velocity, now you see the body moves like this. This is the projectile path. This will be the path of projectile in this case. Now you see here, beta, this will be the maximum height, h maximum, and from here to here, this will be range. This distance is the range r. Now you see here, beta, if this is theta, this is horizontal projection, so this is alternate interior angle, this is also theta. If u is there, so one component in this direction will be u cos theta. Beta, it is clear to you? And upward, perpendicular to this surface is u sin theta. Why? Because this is theta, so this angle will be 90 minus theta, the component of this along vertical direction. Here we are taking vertical to this surface, horizontal to this surface. This is horizontal component and this vertical. Now you see here again, beta, for determining the time of flight, we always take vertical component. For determining the time of flight, we always take what? Vertical component. Now you see here, beta, as the projectile move like this, the vertical component decreases and at maximum height it becomes 0. Now you see here, beta, all here the gravity act on the body in vertically downward direction, g theta.
But this angle will be 90 minus theta. This is clear to you or not? Yes, sir. Clear. बेटा फिर से बता दो, चले बेटा इसको फिर से बताता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए. बेटा see here, this is the inclined plane. This is the surface over which we are considering the motion. This is angle theta. We have projected the body in horizontal direction with velocity u. If this is theta, this angle will be theta. So along this direction, this angle is theta. This is initial velocity. The component of this is u cos theta, and perpendicular to this is u sin theta. If body is here, G will acting downward. This is theta. This is 90 minus theta. But perpendicular to this surface, G is acting downward. So this angle will be 90 minus theta. This angle will be theta. बेटा जिसके साथ एंगल बनता है वो बनता है cos. और ये क्या होगा बेटा? G का 90 माइनस थीटा कॉम्पोनेंट क्या होगा बेटा? G sin थीटा. अब ये देखिए बेटा, क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो इस प्लेन पर है बेटा, ये प्लेन पर तो मोशन ऐसा हुआ बेटा, ये क्या हो गया? मैक्सिमम हाइट होगा बेटा, एच मैक्सिमम. और ये क्या होगा बेटा? यहां से यहां रेंज, जैसा कि बताया. अब देखिए बेटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहां कांस्टेंट नहीं रहेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज होगा. क्यों चेंज होगा? बिकॉज इन द डायरेक्शन ऑफ u cos theta g sin theta is acting. So beta acceleration is there, so this velocity goes on increasing. Here horizontal component goes on increasing, and here vertical component beta इसमें भी होगा बेटा चेंज, क्योंकि इसके अगेंस्ट में u sin थीटा के अगेंस्ट में क्या लग रहा है बेटा? ग्रेविटी लग रहा है. ग्रेविटी का कौन सा कंपोनेंट? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का cos थीटा कंपोनेंट. तो बेटा ये भी पहले घटेगा और घटेगा और घटेगा, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? जीरो. और फिर यहाँ नीचे आएगा तो फिर बढ़ेगा. क्यों बेटा? क्योंकि जी cos थीटा इसे खींच रहा है. पहले जैसे डायरेक्टली वर्टिकली अपवर्ड किसी बॉल को फेंकते बेटा, ग्रेविटी नीचे खींचती है ना, तो बॉल ऊपर जाता है, घटते जाता है. क्यों घटता है बेटा? ग्रेविटी नीचे खींच रही है, तो बॉल ऊपर जाते जाते घट के जीरो, फिर वापस आने लगता है, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ने लगती है. बेटा ये सिमिलरली होगा. u sin theta is the initial vertical component over this surface. So against this cos theta is acting. So initially the velocity goes on decreasing, and at maximum height it becomes zero. So we can say that the vertical component of velocity, the vertical component of velocity becomes zero. Vertical component of velocity becomes zero. In what time? Zero. In time, during time t by 2. But if t is the total time of flight, then when the body reaches to maximum height, the time will be t by 2. बेटा जितनी बॉल को अर्थ के से देखिए बेटा, 10 सेकंड में मैक्सिमम ऊंचाई पर जाएगा, जहां रुक जाएगा तो फिर 10 सेकंड में नीचे आएगा. तो बेटा यहाँ अगर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टी होगा, तो मैक्सिमम ऊंचाई जाने में द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द मैक्सिमम हाइट विल बी टी बाय 2. तो बेटा अब क्या लिखेंगे बेटा? इसके अगेंस्ट में एक्सेलरेशन है, तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है? v is equals to u minus at होता है बेटा, जब मोशन के अगेंस्ट एक्सेलरेशन होता है. बेटा यहाँ जाके फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जा रहा है, और इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट क्या है बेटा? u sin थीटा माइनस बेटा एक्सेलरेशन क्या है? g cos थीटा, g cos थीटा, और टाइम क्या है बेटा? t अपॉन 2. बेटा इसको इधर लाइएगा, ये क्या होगा? g cos थीटा इंटू t बाई 2, माइनस साइन प्लस हो जाएगा बेटा, ये इधर आएगा, एंड दिस इज व्हाट? u sin थीटा. Here time of flight will be, time of projectile will 2u sin theta upon बेटा g cos theta नीचे जाएगा, g cos theta. This will be the time of flight. बेटा this will be the time of flight. Are you getting or not? Sir, getting.
ये ऊपर चला जाएगा बेटा 2 और cos थीटा नीचे। तो बेटा ये टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन है 2u sin थीटा अपॉन g cos थीटा, 2u sin थीटा अपॉन g बेटा। अब ये देखिए cos थीटा, अभी देखिए बेटा आया कि रेंज निकालो भाई, तो रेंज के डायरेक्शन में अब बेटा क्या है, एक्सेलरेशन भी है। तो बेटा रेंज निकालेंगे तो s इज इक्वल टू ut प्लस, अब इस बार प्लस हाफ ए स्क्वायर, बिकॉज वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा बेटा। इसे मैं रब कर रहा हूं, प्लस हाफ ए क्या है बेटा, ए टी स्क्वायर। बेटा यहां पुट कीजिए, एस क्या है बेटा, रेंज। इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। बेटा हम क्या निकाल रहे हैं, रेंज निकाल रहे हैं। तो रेंज निकालने के लिए रेंज के डायरेक्शन में बेटा ये हुआ रेंज, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑन द प्रोजेक्टाइल। आर यू गेटिंग बेटा? You, yes बेटा, now see here. बेटा इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को रेंज लिखा, इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा, u cos थीटा, और टाइम क्या है बेटा, ut, टाइम क्या है बेटा 2u sin थीटा अपॉन g cos थीटा। बेटा ये cos थीटा कैंसिल कर सकते हैं, प्लस क्यों लिखा बेटा, बिकॉज द in the direction of initial velocity acceleration is there, and what is the acceleration, g sin theta plus half e. What is the acceleration, g sin theta, g sin theta beta into t square, in place of t square you put t square of this, so equation will be r equal to 2u square sin theta by j plus half g sin theta into t square। बेटा इसका स्क्वायरिंग कीजिए, 2 का स्क्वायर 4, u का स्क्वायर u स्क्वायर, बेटा sin थीटा का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन बेटा इसका स्क्वायरिंग g स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। बेटा g से g कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो बेटा इक्वेशन आपका ये आ जाएगा रेंज का। इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, इक्वेशन आ जाएगा बेटा ये तो sin थीटा, और इसे क्या करेंगे बेटा, बेटा ये नहीं होगा, इसको बेटा sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा, बेटा इसको लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा। तो बेटा हाफ जी से जी कटा, बेटा ये इक्वेशन आएगा 2u स्क्वायर sin थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा अपॉन जी, ये आ जाएगा इक्वेशन। बेटा बस यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें मैथमेटिकल अप्रोच डालनी है। बेटा सिमिलरली हाउ वी कैन फाइंड द रेंज, बेटा हाउ वी कैन फाइंड द रेंज, यस बेटा हाउ वी कैन फाइंड द नो हाइट, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, अपवर्ड डायरेक्शन के अगेंस्ट एक्सेलरेशन है। बेटा यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जा रहा है, तो हाइट निकालना है, तो बेटा क्या करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as देंगे, क्यों, इसके अगेंस्ट में एक्सेलरेशन है। तो यहाँ जाके वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जा रहा है बेटा, h निकालने के लिए वी टेक वर्टिकल कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट लेते हैं बेटा, याद रखना वर्टिकल कंपोनेंट। बेटा रेंज निकालने के लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेते हैं, कौन सा कंपोनेंट लेते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लेते हैं, याद रहेंगे। बेटा टाइम निकालने के लिए वर्टिकल कंपोनेंट, हाइट निकालने के लिए वर्टिकल कंपोनेंट, एंड फॉर डिटरमाइनिंग द रेंज वी टेक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया u cos थीटा लिया। बेटा टाइम और हाइट निकालने के लिए क्या लेते हैं, वी टेक ऑलवेज वर्टिकल कंपोनेंट फॉर डिटरमाइनिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट, for determining the maximum height. The vertical component becomes 0 at maximum height. U square, what is the initial velocity? U square sin square theta minus 2a is what? बेटा g cos theta, g cos theta into h। बेटा इसको सॉल्व करेंगे माइनस आएगा, तो h की वैल्यू क्या होगी बेटा, u square sin square theta by 2g cos थीटा। बेटा ये आ जाएगा आपको मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला।